Hello, good morning friend and welcome all of you once again, and now you are ready? Okay, fine. We are going to discuss question number 4 here. From the pair of linear equation in the following problems and find the solution by cross multiplication method. Okay, तो यहाँ पर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम सम के लिए, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला क्वेश्चन, सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड रीड द क्वेश्चन विथ मी एंड लिसन केयरफुली ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, a part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student takes food for 20 days, she has to pay ₹1000. ये है हमारी given condition number 1. As the hostel charges, whereas the students B who takes the food for 26 days pays 1180 rupees. ये है हमारी गिवन कंडीशन नंबर 2. एज द हॉस्टल चार्जेस फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातें फाइंड करनी है, एक फिक्स्ड मंथली चार्जेस फाइंड करना है और दूसरा हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। ओके, और इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को अप्लाई करते हुए, और इसके बाद इस दोनों कंडीशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स द फिक्स मंथली चार्ज बी x rupees and the cost of the food per day be y rupees. Then from the given data we get the following pair of the linear equation according to condition number 1 for students A के लिए x plus 20y is equal to 1000 and according to the given condition number 2 students B के लिए x plus 26y is equal to 1180. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए x plus 20y minus 1000 equal to 0 is called the equation number 1 and x plus 26y minus 1180 is called the equation number 2. Now we solve the equation by the cross multiplication method. Here a1 is equal to 1, b1 is equal to 20, c1 is equal to minus 1000, a2 is equal to 1, b2 is equal to 26 and c2 is equal to minus 1180. Respective values को हम डायग्राम में शो करेंगे। x divided by 20, 26 minus 1000 minus 1180 equal to y upon minus 1000 and minus 1180 and 11, और equal to 1 के नीचे दो कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम में 11 और दूसरी कॉलम में 20 and 26. Then now crosswise multiplication and then subtraction. हमें मिलेंगे 20 multiplied by minus 1180 is equal to minus 23,600 minus दूसरा मल्टीप्लिकेशन होगा 26 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1000 एंड माइनस माइनस प्लस 26,000 इक्वल टू y अपॉन माइनस 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 1000 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1180 इक्वल टू 1180 एंड इक्वल टू 1 बाय 26 ones are 26 minus 20 ones are 20. So next step is 26,000 minus 23,600, we get 2,400. Therefore x divided by 2,400 equal to y upon 1,180 minus 1,000 equal to 180. Therefore y upon 180 and 26 minus 20 is equal to 6. Therefore 1 by 6. So we get ratio x by 2,400 equal to y by 180 equal to 1 by 6. Now compare 1 and 3. We get x is equal to 2,400 divided by 6 is equal to 400 and y is equal to 180 divided by 6 is equal to 30. Thus the monthly fixed charge is 400 rupees and the cost of per day is 30 rupees day. Okay, now question number 2. Once again open your textbook and read the question number 2 here. With listen me. The fraction become 1 by 3 when 1 is subtract from the numerator and it's become 1 by 4 when 8 is added to its denominator and find the fraction. तो सबसे पहले हमें
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के लिए फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एज्यूम करना है. सो लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x and y respectively, and then the required fraction is x by y. By the given data we get, according to the first condition is a fraction become 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. Therefore x minus 1 by y is equal to 1 by 3. Cross multiplying, by using the cross multiplying we get 3x minus 3 equal to y, and therefore now we convert into the standard form. Finally we get 3x minus y minus 3 equal to 0 is called the equation number 1. Now according to the second condition, it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. So therefore x divided by y plus 8 equal to 1 by 4, and therefore by using the cross multiplication 4x is equal to y plus 8, and therefore 4x minus y minus 8 equal to 0 is called number equation 2. Now from equation 1 and 2 we get coefficients. A1 is equal to 3, B1 is equal to minus 1, C1 is equal to minus 3, A2 is equal to 4, B2 is equal to minus 1, and C2 is equal to minus 8. Now we solve the equation by the cross multiplication method. X upon minus x upon first column minus 1 minus 1, second column is minus 3 and minus 8 equal to y upon first column minus 3 and minus 8, and second was 3 and 4 equal to 1 upon first column is 3 and 4, and second is minus 1 minus 1. Now by using the cross multiplies and the subtraction we get minus minus plus 1 8s are 8 minus minus plus 3 1s are 3. So we get x by 8 minus 3 equal to y upon plus minus minus 4 3s are 12 minus plus minus 8 3s are 24 minus. Therefore we can write y by minus 12 minus plus 24 equal to 1 upon 3 into minus 1 is equal to minus 3 plus minus 4 minus 1 is equal to minus 4, and minus plus, so therefore minus 3 plus 4. Finally next step is 8 minus 3 is equal to 5, therefore x by 5 equal to y upon 24 minus 12 is equal to 12, therefore y by 12 equal to 1 upon 4 minus 3 is equal to 1. So finally we get x by 5 is equal to y by 12 is equal to 1 by 1. Now compare 1 and 3 ratio, and therefore we get x is equal to 5 and y is equal to 12. Hence the required fraction x by y is equal to 5 by 12. One more example from your continuous question number 4. इसका third one ले रहे हैं हम. Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right question and losing 1 mark for each wrong question. Had 4 marks between awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer. Then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? सबसे पहले हम सपोज करेंगे. Suppose Yash gave x right answer and y wrong answer, and then from the given data we get, according to first condition Yash scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and lose 1 mark for each wrong answer. Therefore first question is arise, 3x minus y is equal to 40. 3x minus y is equal to 40 is called equation number 1. Now according to the second condition, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then according to second condition we form the equation number 2, 4x minus 2y is equal to 50. That means divided by 2 all divided by 2 all the terms, and finally we get 2x minus y is equal to 25 is called the equation number 2. Now equation 1 and 2 convert into the standard form, and we get 3x minus y minus 40 equal to 0, and 2x minus y minus 25 equal to 0. So compare to the standard form, and we get the coefficient a1 is equal to 3, b1 is equal to minus 1, c1 is equal to minus 40, and b2 is a2 is equal to 2, b2 is equal to minus 1, and c2 is equal to minus 25. Then we can write here x upon first column minus 1 minus 1, second column minus 40 minus 25, y upon first column is minus 40 minus 25, and second is 3 and 2, and 1 upon first column is 3 and 2, and second is minus 1 minus 1.
Now by using the crosswise multiplication and subtraction, finally we get x upon 25 minus 40, y upon minus 80 plus 75, and 1 upon minus 3 plus 2. Therefore next step is x minus 15 equal to y minus 5 equal to 1 minus 1. Therefore x by 15 equal to y by 5 equal to 1 by 1, and compared to first and third ratio we get x is equal to 15 and y is equal to 5. That means then the total number of question is 15 plus 5 is equal to 20. Thus there were 20 questions in the test finally. Okay, तो dear students, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे हम होमवर्क की इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 से 4 और 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। सो प्लीज वंस अगेन राइट डाउन योर होमवर्क एंड लेट्स सी द केयरफुली एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑल, एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद करा दें, जो टेक्सचुअल इलस्ट्रेशन आपको कैलकुलेट करके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसे भी आपको प्रैक्टिस करना है, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 3 अलजेब्रिकल मेथड्स लगभग अब पूरे कर दिए हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स लिया है, जिसके कंटिन्यूस आपके पास 12 वीडियो अब अवेलेबल है। इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से लर्न किया होगा, नोट डाउन किया होगा, और जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया है आपने पूरी प्रैक्टिस की होगी। इस उम्मीद के साथ फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड